Hello guys and welcome back to Excelsior Academy. So this is part of the Watson summary series, the chapter the mutability and the repair of DNA, 7th edition, and today we are going to do the lecture 4. So before I proceed, so in the previous lectures we talked about what are the different types of the DNA damage, right? And we also know that we also mentioned about the certain chemical agents which can cause mutation. For example, we have got the intercalating dyes. So we talked about the intercalating dyes such as ethidium bromide, right? Ecridin orange. So propravin, all these are intercalating dyes and they can cause mutation. So in order to understand whether the chemical is going to cause mutation in the DNA, we need certain tests. And every time we cannot do animal tests. So that's why we are going to talk about the ARMS test, the best and the economical way to test whether the chemical is carcinogenic in nature or not. Okay, so determining the potential carcinogenic effects of chemicals in animals is time consuming and expensive. ये तो है ही, because एक तो टाइम लगेगा, आप पहले एनिमल्स को ब्रीड करोगे, उसके बाद आप उसमें ऐड करोगे केमिकल कार्सिनोजन, और फिर उसके बाद हमें चेक करना है whether it is going to affect their survival or not, and all to maintain all this thing, it is going to be very expensive. Now, because most tumor-causing agents are mutagens, the potential carcinogenic effects of chemicals can be conveniently assessed from their capacity to cause mutations. और ये हम कैसे करेंगे? By using the ARMS test. ठीक है? So Bruce Arms of the University of California at Berkeley devised a simple test for the potential carcinogenic effects of chemicals based on the capacity to cause mutations in the bacteria Salmonella typhimurium. So आपको क्या याद रखना है? So first of all, it's called the ARMS test, and ये आपको पता करेगा whether any chemical has got potential carcinogenic effects or not. ठीक है? And कौन सा organism हम यहाँ use करें? Salmonella typhimurium. Now, this test uses the strain of typhimurium that is mutant for the operon responsible for the biosynthesis of amino acid histidine. ठीक है? अभी ये भी आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है, because this is how you will understand whether the chemical is having the mutagenic effect or not. For example, the mutant operon might contain a missense or a frameshift mutation in one of the genes for histidine biosynthesis. इसका मतलब क्या, जो हम salmonella bacteria यूज कर रहे हैं, it is not able to synthesize. ठीक है, वो histidine biosynthesize नहीं कर सकता है. ठीक है. As a consequence, the mutant cells fail to grow and form colonies on solid medium lacking histidine. तो अभी क्या है, आपके पास साल्मोनेला है, आपने उसको ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हमने हिस्टीडीन ऐड नहीं किया, नो एडिशंस टू मीडियम लगा, सो व्हाट विल हैपन, कॉलोनीज अराइजिंग फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिवर्टेंट्स, यानी कि जिस कॉलोनीज में सी विदाउट हिस्टीडीन बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो, बट अगर कुछ रिवर्टेंट म्यूटेंट हो गए, यानी कि रिवर्ट बैक हो गए, तो दोज कॉलोनीज कैन ग्रो और देयर विल बी कंटामिनेशन. सो कीपिंग एन आइडियल कंडीशन, कि हमने ये कंडीशन रखा है कि यहाँ पे कुछ भी कंटामिनेशन नहीं है, बट अगर कोई स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो रहा है एंड दैट इज मेकिंग योर हिस्टीडीन जीन फंक्शनल, तो वो हिस्टीडीन बायोसिंथेसाइज करेगा एंड इट विल सर्वाइव. ठीक है. नाउ आपने यहाँ पे इस केस में यू हैव एडेड द केमिकल, सो हियर यू हैव एडेड, सो व्हाट विल हैपन, so that mutagen is going to make or revert the mutation which has had happened. Now because of that, what will happen, you will get so many colonies. अगर आपको ये ऐसा केस दिखता है, so it means that when you get more colonies, it means that chemical is going to act as a mutagen. और अगर ऐसा मिलता है, so it means it is safe. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ. तो आर्म्स इसमें हम कैसे करते हैं ना. So this is what is written over here, जो हमने भी डिस्कस किया. So let's read once. However, if the mutant cells are treated with chemicals that is mutagenic, the missense or the frameshift mutation reverts in a small number of mutant cells because the chemicals action in these cells. Now, this reversal restores the capacity of the cells to grow and form colonies on solid medium lacking the histidine. A more potent mutagen translates into a greater number of revertant colonies. So these chemicals, they will cause cancers. Some chemicals that cause cancers are not mutagenic to begin with, but कैसा होता है, एक बार जब वो detoxify होता है liver में, it might become a mutagenic in nature. ठीक है. Now, to identify chemicals that are converted into mutagens in the liver, ARMS test treats potential mutagens with a mixture of the liver enzymes.
Chemicals that are found to be mutagenic in the arm cells can then be tested for their potential carcinogenic effects in animals. So guys, ये बहुत ही important topic है. आपको याद रखना कि आर्म सेल्स किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. One more thing, there are certain drugs जो हम वैसे डायरेक्टली टेस्ट करते हैं तो कार्सिनोजेनिक नहीं होते हैं, बट एक बार खाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट आते हैं वो आपके कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोस पर्टिकुलर म्यूटेजेंस विल बी ट्रीटेड विद द मिक्सचर ऑफ द लिवर एंजाइम्स. ठीक है, एंड देन आप उसका आमसेस कर सकते हो. Okay, so guys, that's all. This was really very important topic. I hope you understood what is ARMSYS, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं. ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व नहीं हुआ है, so please share with us through your comments or in the Telegram channel. So till then, guys, take care.